we do not focus on this. Actually, initial level, when I will teach you, I will provoke the thought. My initial method will be to go for 400, not 450, for 460. And that 400 is to stick to the demand. What I'm writing, I will stick to the demand. I will not go here and there. And that is figuring out demand. So as I will teach you how to figure out the demand. Then after demand, you should go for the point generation. What points I will write? In what way I have to think for that topic? Then actually answer should come. This process should take 7 seconds. But initially it may take up to half an hour. Half an hour. I am speaking in a practical way. मैं कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. When this will be there, then you can solve the problem of space and problem of time. ये मैं बाद में समझाता हूं. अब इस कंटेक्स्ट में मुझे प्रिपेयर किस लिए तुम्हें करना है? I have to prepare you for this topic. These kind of questions. My initial topic for 3 days will be interlinking of rivers. From that same topic, I will teach you how to figure out demand, point, and how to go for the structure and how we can write the answer. And throughout your journey for the answer writing, these 3 lectures will be the base. जब भी तुम आंसर राइटिंग से साइडलाइन होगे, वो 3 लेक्चर तुम्हारे बेस का काम करेंगे. In what way I have to think? In what way I have to generate the points? Then we go syllabus by syllabus next week onwards. वो मेथड्स क्या होगा मैं समझाऊंगा. बट बिफोर टेकिंग इंटरलिंकिंग रिवर्स, मैं ये टॉपिक अननोन क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि सब तुम लोग विल बी ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म. तुम पढ़ भी लोगे, पढ़ नहीं पाओगे. बुक्स में कहीं आंसर ही नहीं. मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझे बताओ. देन आई विल एक्सप्लेन. एंड follow the method of learning by doing, not just by reading the question. तुमने क्वेश्चन देखा, एग्जाम में भी तुम्हारी आदत है जस्ट सी द क्वेश्चन, आंसर. नो, तुम में से किसी ने भी पेन पेपर पर हाथ नहीं लगाया. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? जैसे सेंटर से बननी शुरू होती है स्कीम्स और सेंटर से लेके लास्ट जो लास्ट लेवल तक है उन तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती. हाफ डिमांड, हाफ मिस कर गए. अब देखो टाइम कितना लगा तुम लोगों को अभी? एग्जाम में कितना टाइम है? 1 सेकंड में तो क्वेश्चन की डिमांड समझ में आनी चाहिए. मैं अभी थोड़ा सिंपल मेथड समझा रहा हूं, फिर दैट उसी थॉट को मैं 3 दिन कंसोलिडेट करूंगा, आज, कल, परसों. उसके नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट फ्रॉम सिलेबस बाय सिलेबस. जहां वो थॉट कंसोलिडेट होगा वो आंसर राइटिंग बनेगा. बिकॉज आंसर राइटिंग का एक मिथ है, डेली आंसर राइटिंग. दैट इज नॉट द आंसर राइटिंग. When answer writing is there, you should have a command where you can write those questions which you haven't seen.
In UPSC, 20 questions will be there, 10 questions will be there where content will be there. जो इन करवाएगा वो ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे. In answer writing, 3 stages are there. First, to find out the demand. Diagram केस में नहीं. First stage is to find out the demand. What is demand of the question? First, अब यहीं पर क्वेश्चन उठता है, how to find out the demand, because all topper says demand को आइडेंटिफाई करो. बिग क्वेश्चन क्या है? How? In your journey, even if you are at the peak, जहां तुम फॉल्ट करोगे वो यही होगा, डिमांड. Next, from the demand, the second stage is to generate the point. What will be the content? And there we have a various studies. One study is syllabus, and syllabus is at the core. Syllabus तुम्हें by heart होना चाहिए. Second is staple approach, life cycle approach. वो क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे. Third stage is you have to structure whatever point you have generated, whatever demand you have identified. What will be my first point? What will be my second point? What will be my third point? That structure should be there. And actually, after this, your answer will come. अब यहां पर प्रॉब्लम होगी, what should be intro? What should be the conclusion? What should be the language? When they are giving comment, when they are giving discuss, when they are giving critical analysis, what should be my language? What do you mean by critical analysis? और चलो शुक्रिया है कि तुम में से कई लोगों, कुछ लोगों ने नहीं बोला प्रोज एंड कॉन्स होता है. नहीं, आधे से ज्यादा 90% लोगों को मिथ है क्रिटिकल एनालिसिस मींस प्रोज एंड कॉन्स. यस और नो? इज क्रिटिकल एनालिसिस मींस प्रोज एंड कॉन्स? मेरे पे बिलीव कैसे करोगे कि नहीं है? (2013) UPSC question paper 3. What do you understand by triple P? Critically analyze pros and cons of triple P. 2015 UPSC mains question paper 3, contract farming. What do you understand by contract farming? Critically analyze pros and cons of contract farming. इसका मतलब क्या है? प्रोज एंड कॉन्स नहीं है ना, जो तुमने बोला वही मीनिंग है. वो लैंग्वेज हम देखेंगे बाद में. यहां पर प्रॉब्लम, हाउ टू जस्टिफाई, हाउ टू राइट द लैंग्वेज, वो है यहां. अब ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का जनरल थॉट बता रहा हूं डिमांड का, फिर मैं टॉपिक्स पे आऊंगा. एंड जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाने का तरीका भी समझाऊंगा, बिकॉज उसमें कैसे पढ़ते हैं और हमारी वीकनेस क्या है और कैसे हम टॉपिक को पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो टॉपिक को पढ़ना भी स्टाइल फॉर द आंसर राइटिंग. जैसे whenever a question is there, first I'm explaining you how to figure out the demand. Whenever a question is there, first your thought should be, I have to underline the keywords, whatever keywords are there of the question. After identifying the keywords, arrange them, then make a relation between the keywords. This question, the first keyword for this question is performance of welfare scheme. Now, these performance of schemes are implementing, the government is implementing for whom? Now, which is not so effective schemes?
Why they are not effective? Due to first reason, absence of their awareness. Second reason, active involvement at all stages of policy. Now, whom does this there refers to? ये देयर इसके लिए अलग है, ये देयर इसके लिए अलग है। हिंदी देखो, वन देयर इज पॉलिसी, वन देयर इज वल्नरेबल पीपल। या हिंदी में दो वर्ड यूज किए गए हैं, उनके, उनके। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, देयर। उनके यहां पर है पॉलिसी प्रोसेस, ये उनके हैं अवेयरनेस अबाउट द स्कीम। इनिशियल जब करना है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड अरेंज देम लाइक परफॉर्मेंस ऑफ welfare scheme. Keyword. These are not effective. Now, this performance of welfare scheme being implemented for vulnerable sections, not effective. Reason, awareness. Not effective. Active involvement on all stages of policy process. Our mind is tuned to think in a complex way or in a simple way. कॉम्प्लेक्स, मुझे यहां से झंडेवालान जाना है, मैं कहूं यहां से जाओ, बस पकड़ लो, और बस पकड़कर जो है पहुंच जाओगे, या नहीं तो मेट्रो पकड़ लो। दूसरा, गो outside the class, take right turn, then take the left turn, main road will come, cross the main road, go right, stand is there, from either you can catch the bus, metro station is there। ये वाला सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये वाला एक एक डायरेक्शन है, यहां पर सिंपल है ये पूरा, पहला वाला कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आ रहा है। योर माइंड इज ट्यून टू थिंक इन अ सिंपल वे। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां सोचना है तो वो सोच पाएगा, पर मैं कहूं सोचना है तो सोच नहीं पाएगा वो। सो इन आंसर राइटिंग तुम्हें थॉट प्रोसेस को बहुत सिंपल वे में उसको सोचवाना है। देखिए यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम, द परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स मींस दोज वेलफेयर स्कीम व्हिच आर इंप्लीमेंटेड फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। So my mind will think the performance of welfare scheme means welfare schemes are not being effective. Data कहाँ है मेरे पास? Which scheme I can think of for the vulnerable sections? Otherwise जब तुमने उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ा, तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा मेरे पास डाटा है क्या है। Where example is there? सोच पाए उस समय? नहीं सोच पाए ना। पर अगर तुम इस तरह सोच रहे हो, तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल है कि schemes are not being effective? Any schemes, any scheme, data which you are reading in the newspaper. Now these are not effective. Why? Reason, awareness is not there. तो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन उठाओगे, how and why awareness about the scheme is affecting the performance of the scheme? Can you think of? कौन जनरेट कर सकते हो? अब नहीं है। How your performance in the prelims is being affected when you are not aware of PYQs? इसका आंसर दे सकते हो? एक घंटे वो तब तो दे सकते हो, दे सकते हो ना? वही थॉट यहां आएगा ना। अवेयरनेस, अगर तुम्हें केवल अवेयरनेस पढ़ा है, जब तुम ये अवेयरनेस है, यू कैन ब्रेक अवेयरनेस टू द एक्टर। हु इज द एक्टर?
vulnerable section. Awareness to whom? Bureaucracy. पॉइंट जाएंगे ना, ऑटोमेटिक पॉइंट्स आएंगे ना, पॉइंट्स आर ऑटोमेटिक. जब यहां सोच पाओगे, व्हेन यू कैन थिंक ऑफ 2 पॉइंट्स हियर, व्हेन यू कैन थिंक ऑफ 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट हो गए. तो आंसर राइटिंग में तुम्हें बहुत सिंपल ये सोचना है. मुझे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं लेना था, मुझे बस समझाना है कि तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन को ट्रेन करना ही आंसर राइटिंग है. नॉलेज देना आंसर राइटिंग नहीं. ना अवेयरनेस, व्हेन अवेयरनेस इज नॉट देयर, व्हाट मे हैपन. व्हेन अवेयरनेस इज देयर, व्हाट इज हैपनिंग. लाइक bureaucracy, awareness is not there. That's why you have made pakka house for the slum dwelling people in Dwarka, and these slum dwelling people are coming to the Rajendra Nagar. They will not come. They will give their home on the rent. रहेंगे यहीं पर, because bureaucracy को जानकारी नहीं है where they are working. ऐसे एमजी नरेगा. In एमजी नरेगा you have introduced Aadhaar to check the corruption, but these people are not aware of how to give the fingerprint, how to give this fingerprint in the system. When they are not aware of, they are not going, so entitlement are not reaching to them. एमजे नरेगा में 3-4 महीने से न्यूज चल रही है ना, 4 और 5 मंथ से न्यूज चल रही है. क्या तुमने सोचा ये न्यूज कहां यूज होगी? क्या तुम्हारे किसी के भी नोट्स में है ये न्यूज? नहीं. क्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे. बट व्हेन यू आर रीडिंग एंड यू कैन थिंक ऑफ, आई कैन यूज इन दिस वे, बिकॉज क्वेश्चन विल बी नोन और क्वेश्चन विल बी अननोन इन द एग्जाम. अननोन एंड दोज काइंड ऑफ अननोन क्वेश्चन, वो खबर तुम्हें यूज होनी चाहिए. वो है आंसर राइटिंग. ऐसे ऑन ऑल स्टेजेस, बिकॉज यहां पर जब तुम इसको देखते हो, यू कैन ब्रेक द वर्ड अवेयरनेस. You know awareness meaning. When here this word is there, active involvement in all policy process. You know the policy process, formulation, implementation, evaluation, feedback. जो पबेड वाला होगा उसको तो 7 स्टेज में ले जाएगा, जो जनरल वाला होगा 3 स्टेज में ले जाएगा, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन. और जो होगा इवेल्युएशन के बाद फीडबैक ले आएगा. यही होगा ना. अब 4 स्टेज में क्या 4 पॉइंट नहीं आएंगे? तो वो जो है प्रोसेस है. सो टू अंडरस्टैंड द डिमांड, द मेन पॉइंट इज ब्रेक द क्वेश्चन, अंडरलाइन द कीवर्ड एंड मेक द रिलेशन. एंड इफ perfect relation is there, you can find out the perfect demand. And when these type of complex questions are there, answer is there in those questions. If this question is asking why schemes are failing, no. Question is saying schemes are failing. Why? Because of the 2 reasons. What do you have to find out? You have to find out how. Question is giving the answer of the question. वो आंसर राइटिंग वो है.